Physics का third chapter laws of motion. I'm going to start the first part of that lesson. Just close that fan. लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट है. जब ये लेसन शुरू हो रहा है इसमें सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर क्लासेस का रिवीजन है. फर्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फोर्स. आपका इसका डेफिनेशन का आंसर आएगा इट इज अ पुश और अ पुल which changes. Go and bring the wire. जाओ वायर ले आओ. Which changes. You just go. Or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction of motion of body. तो फोर्स होता क्या है. किसी भी बॉडी में हम धक्का दें या उसे खींचें जिससे वो बॉडी अगर रुकी हुई है तो चलने लगे, चल रही है तो रुक सके या उसकी डायरेक्शन बदल जाए तो उसको हम फोर्स कहते हैं. तो यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें फोर्स से हम लोग इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं. इट चेंजेस द स्पीड. नेक्स्ट, it changes the direction of motion. And it changes the shape of the object. After that, जो नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी होती है वो होती है what is law of inertia. And law of inertia is given by Galileo. तो सेकेंड टॉपिक जो हमें तैयार करना होता है थ्योरेटिकल, what is law of inertia. अभी हम आपको बताएंगे इनर्शिया क्या चीज़ होती है. बट फर्स्टली लॉ ऑफ इनर्शिया. This law is also known as Galileo Law of Inertia. इसका स्टेटमेंट क्या है. इसका स्टेटमेंट है अ बॉडी मूविंग with a certain speed along a straight path
will continue to move with same speed along the same path in the absence of external forces. This is the statement of the Galileo's law of inertia. तो गैलीलियो ने एक लॉ दिया था, उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी किसी स्पीड से चल रही है तो वो अपनी उसी स्पीड से चलती रहेगी, उसी रास्ते पे चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया? नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज इनर्शिया। नाउ inertia is the term inertia means resistance to change. So it is property of a body by which it cannot change by itself. It's a state of rest or of uniform motion. In a straight line is called inertia. So this is the definition of the inertia. And inertia is of different types. ये तीन तरीके से होती हैं, तीन तरह की होती हैं. That means types of inertia. Number 1 है inertia of rest. The tendency of a body to remain in its position of rest. कोई बॉडी है वो अगर रेस्ट में है तो वो लगातार रेस्ट में ही रहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। सेकंड है inertia of motion. The tendency of a body to remain in its state of uniform motion in a straight line. Is called inertia of motion. मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो लगातार मूव करती ही रहेगी जब तक कि हम उस पर बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे और उसे नहीं रोकेंगे। सो दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड तरह का इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
The inability of a body to change by itself in the direction of motion is called inertia of direction. उसके बाद यानी इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है। इसके बाद क्लास 11th में थ्योरेटिकल आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मोमेंटम। नाउ व्हाट इज मोमेंटम? इट इज quantity of motion possessed by the body. Mathematically, it is equal to product of mass and velocity of the body. किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम। सो फॉर द फॉर्मूला मोमेंटम वी हैव मास इनटू वेलोसिटी। अब बेटा अगर हम मास को m से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं तो मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है। सो दिस इज योर फॉर्मूला। यहाँ पे जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मोरओवर अब हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। सो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, आपकी मास की यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट उसके बाद आपका थ्योरेटिकल आएंगे न्यूटन्स के लॉज। तो न्यूटन्स के लॉज कराने के पहले न्यूटन के 3 लॉज हैं, तीनों लॉज का स्टेटमेंट है आपका। So I will take that 3 laws in the different lecture, but I am going to explain you different numericals based on force and momentum. So numericals. Question number 1. A force acts for 10 seconds on a body of mass 10 kg, after which force ceases and the body describes (50 meter) in next 5 seconds. Find magnitude of force.
आपका ये न्यूमेरिकल है। जब भी कुछ भी न्यूमेरिकल होता है सबसे पहले हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं कि उस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे कि किसी बॉडी पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है 10 सेकेंड्स के लिए, यानी जो आपको टाइम दिया हुआ है वो 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। बॉडी का जो मास है, मास ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। और उसके बाद बॉडी 50 मीटर्स, जब हम फोर्स लगाते हैं तो 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है। सो डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी is equal to 50 meters and then the time taken is 5 seconds. तो अब हमें यहाँ पर निकालना है कि कितना उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। सो फर्स्टली when the body covers 50 meter in 5 seconds, then the velocity of the body when the force is applied is displacement upon time, and the distance covered by the body is 50 meter in the time of 5 seconds. That means its velocity becomes 10 meter per second. Now moreover, this velocity becomes the final velocity. In the starting, the body is at the position of rest. So we use the Newton's first law, V is equal to U plus AT, in order to find out the acceleration produced in the body because of the application of the force. So we write over here 10, initial velocity is 0, acceleration is A, and that force, it was for the 10 seconds. So value of acceleration is 10 by 10, which is equal to 1 meter per second square. Now we have to find the value of the force which was applied on the body, mass into acceleration. Now mass of the body is 10 kg, acceleration is 1, so we have 10 Newton. So 10 Newton force is applied on the body. So in this way you have to solve the different questions. Now one more question I am going to take. Question number 2. A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. If both masses are tied together, then what acceleration is produced? चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दो डेटा हैं बेटा। F1 मान लीजिए ले लिया मास 1 के लिए, ठीक है, और हमने F2 ले लिया दूसरे मास के लिए। So then force of 5 Newton is given a mass m1 and the acceleration of 8. Similarly, force of 5 Newton gives the mass m2 and acceleration of 24. So from here, value of mass 1 is 5 by 8, value of mass 2 is 5 by 24. Now we tied them together. So net mass is, we have to sum up both of them, 5 by 8 plus 5 by 24. Now we take the LCM, it becomes 24, 8 3s are 24, 15 plus 5, that is 20 by 24.
4 kg. Now we have to find the acceleration, and the force applied is same of the 5 Newton. So that is M. Let it be taken as capital M and capital A. Let it be capital M. Now 5 Newton is applied and net mass is 20 by 24. Our acceleration is produced, which is equal to 5 into 24 by 20. So 5 4s are 20 and this is 6. So 6 meter per second square acceleration is produced. Now next numerical, forces of 5 under root 2 Newton and 6 under root 2 Newton are acting on a body of mass 1000 kg at an angle of 60 degree to each other. Find the acceleration developed in the body distance covered by the body and the velocity after 10 seconds. चलिए ये सारी चीज़ें हम लोग निकालते हैं, देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा. Now when there are two forces, they are acting at an angle of 60 degree, then the net force is equal to F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. We use this formula in order to find the net force. So from here we get 5 under root 2 whole square plus 6 under root 2 whole square plus 2 5 under root 2 into 6 under root 2 into cos theta. So it is cos 60 degree. Now value of cos 60 degree is 1 by 2, so it is cut down. So now 5 under root 2, so that is 50, and here it becomes 72 and it becomes 60. So when we add up 1 by 2 get cancelled, and 5 6 are 32 is 60, and ultimately we get the answer of 182. When we find the square root, we get 13.49 Newton. Now if we have to find the acceleration, we use the formula F by M. So from here it is 13.49 and mass is 1000 kg. So when we divide, we get 0.01349 meter per second square. And velocity, we can use this formula U plus AT in order to find. Now initial velocity is 0, acceleration is 0.01349, and time acting for the 10 second, 10 square. So when you solve, you get the answer 0.6745 meter per second. So in this way, in the next lecture, I will take the some numericals on the momentum and the different laws